ओके, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। हम लोग पिछले क्लास में रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को लेके डिस्कशन किए थे, जैसे सोलर, विंड, हाइड्रो पावर, टाइडल और जियोथर्मल। ये सब टॉपिक्स हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। तो आज का क्लास में हम लोग नॉन रिन्यूएबल एनर्जी उसको लेके डिस्कशन शुरू करेंगे। सो इन द लास्ट क्लास we had discussed about a few renewable energy sources, and in this class we will discuss non-renewable energy. But prior to that, we will begin our discussion with biomass energy. We will begin our discussion with biomass energy. So please write down the name of the topic: biomass energy. Biomass energy. Biomass energy. Please write down the name of the topic: biomass energy. Okay, so first we need to understand the meaning of the term biomass. So biomass, in very simple terms, is practically the organic matter produced by plants and animals. So what is biomass? Biomass, in very simple terms, is practically the organic matter which is produced by the plants and animals. It includes plants and animals' dead bodies, their wastes, their excrements, their body parts, etc. etc. तो पहले बायोमास यानी कि जीव भर, इस शब्द का मतलब हमको समझना है। तो बायोमास मतलब ये एक जैविक पदार्थ जो प्राणी या फिर वनस्पति का शरीर से हमको उपलब्ध होता है। तो बायोमास मतलब ये एक जैविक पदार्थ जो प्राणी या फिर वनस्पति का शरीर से हमको उपलब्ध हो सकता है। सो बायोमास इज practically the organic matter which is produced by the plants or animals. It may be their body parts, it may be their dead bodies, it may be their sewage, waste materials, excrements, etc. So the question is, how do we utilize the biomass? So biomass is utilized in many ways. Biomass is utilized in many ways, and the three commonest ways by which biomass is utilized is in the form of energy plantations, number 2 in the form of petrocrops, and number 3 by utilizing agricultural and urban waste biomass. So how do we utilize biomass energy? Biomass energy is mainly utilized by three means, that is by energy plantations, by petrocrops, and by utilizing एग्रीकल्चरल एंड अर्बन वेस्ट। तो मतलब तीन उपाय से हम लोग बायोमास का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे पहले एनर्जी प्लांटेशन, मतलब ऐसा एक प्लांटेशन जिससे ऊर्जा उत्पन्न हो सके। नंबर 2 पेट्रोक्रॉप्स, और नंबर 3 शहर की जो नागरिक वेस्ट है, उस नागरिक वेस्ट से बायोमास को भी यूटिलाइज किया जा सकता है। अच्छा, so first we shall talk about energy plantations. Now we already know that the solar energy is trapped by the green plants, and they trap the solar energy via the process of photosynthesis and convert it into biomass energy. So there are certain fast growing trees like say cottonwood, like poplar, there are some say non-woody herbaceous grasses, there are some aquatic weeds which can be burnt to get energy. So what are energy plantations? Energy plantations practically refer to the fast growing woody trees, or fast growing non-woody trees, or the aquatic weeds which on burning will give us energy, Why are they giving us energy? Because being plants, they can carry out photosynthesis and trap the solar energy, and this energy which is trapped in their bodies, it can be utilized either by direct burning, or we may convert it into a fuel by the process of fermentation, or by using technology we may convert their biomass into a burnable gas. So what are the three ways we are utilizing it? Either by directly burning the plant parts,
or by converting them into fuel by the process of fermentation, which takes place in the absence of oxygen, or you may also convert their bodies into a burnable gas. So मतलब एनर्जी प्लांटेशंस, एनर्जी मतलब ऊर्जा, एनर्जी प्लांटेशन का मतलब क्या है, हम लोग कुछ ऐसे पेड़ों को लगाएंगे जो बहुत जल्द बढ़ उठते हैं, जो बहुत जल्दी बड़ा हो जाता है, जैसे पॉपुलर, कॉटनवुड, ये जैसे जो पेड़ हैं ये जल्दी जल्दी बड़े हो जाते हैं। या फिर कुछ घास जो जल्दी बड़े होते हैं, जैसे कि आपका शुगर केन या फिर शुगर बीट या फिर कुछ एक्वेटिक वीड्स जो घास पानी में होता है। तो अगर हमारे पास ऐसे पेड़ों की पत्ते, सूखा डाल एक्सेट्रा ये सब रहा जो फास्ट ग्रोइंग है, उसको हम लोग जला के ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं। तो या फिर उसको जला के हम लोग ऊर्जा उत्पन्न करेंगे, या फिर ऑक्सीजन का एब्सेंस में उसको हम लोग फर्मेंटेशन करके वहाँ से हम लोग फ्यूल बना पाएंगे, या फिर कोई ऐसे तकनीक से हम लोग उस पेड़ का अंतर्निहित जो बायोमास है, उस बायोमास को हम लोग एक बर्नेबल, एक गैस में रूपांतरित करेंगे। जब वो गैस को जलाएंगे उससे ऊर्जा पैदा होगी। मतलब एनर्जी प्लांटेशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम लोग ऐसे पेड़ों को प्लांटेशन करेंगे जो हो जल्दी बढ़ते हैं, और फिर उसमें अंतर्निहित जो बायोमास है, उसमें अंतर्निहित जो जीव भर है, उस जीव भर या फिर बायोमास को हम लोग या फिर जला के या फिर फर्मेंट करके या फिर उसको बर्नेबल गैस में रूपांतरित करके उससे हम लोग ऊर्जा संग्रह कर सकते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट वे बाय विच वी यूटिलाइज बायोमास एनर्जी. The second way is by planting petrocrops. I am writing down the name petrocrops. So please note down petrocrops. So please note down petrocrops. Okay, so this is the second way by which we can utilize biomass. So the question is, what are petrocrops? Now there are certain latex containing plants which belong to the family of euphorbias. I am writing down. So there are certain latex containing plants which belong to the family of euphorbias, or Euphorbiaceae, which whose extracts are rich in hydrocarbons. So they can yield oil under certain conditions of high temperature and pressure, and these oils are rich in hydrocarbons. And this oily material which we can extract from the plants belonging to the Euphorbiaceae family, they can be burned in diesels, or they can be refined to get gasoline. And so these plants are popularly called as petrocrops. So these plants are popularly called as petrocrops. So what are petrocrops? Petrocrops are practically those plants, petrocrops are practically those plants which are latex bearing. Say for example the plants belonging to the family of Euphorbiaceae. And why are we so interested in them? Because under certain conditions of temperature and pressure, the oil extracted from these plants are rich in hydrocarbons, and this oil can be burnt in diesel engines, or they can be refined to get gasoline. And because this oil can be used in diesel engines, we often call the oil extracted from the plants of Euphorbiaceae family as biodiesel. मतलब बायोडीजल हम लोग को कहाँ से उपलब्ध होता है? बायोडीजल हमको उपलब्ध होता है पेट्रोक्रॉप से। तो पेट्रोक्रॉप मतलब ये एक ऐसा वनस्पति है जिसको हम लोग अंडर सर्टेन कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इस क्रॉप से, इस प्लांट से हम लोग तेल को निचोड़ सकते हैं, और इनका तेल को हम लोग डायरेक्टली डीजल इंजन्स में जला सकते हैं, या फिर इस तेल को रिफाइन करके हम लोग गैसोलीन बना सकते हैं। तो ये जो तेल हमको पेट्रोक्रॉप से उपलब्ध होता है, इसी तेल को हम लोग बोलते हैं बायोडीजल, इसी तेल को हम लोग बोलते हैं बायोडीजल. सो दिस वाज द सेकेंड वे बाय विच वी कैन प्रोड्यूस बायोमास एनर्जी. द फर्स्ट वे वाज एनर्जी प्लांटेशन, second way is petrocrops.
Now the third is by utilizing the agricultural and urban waste biomass. So obviously, if you think of the agricultural sector produces tremendous amount of waste biomass. Say for example, sugarcane residues, coconut shells, cotton stalks, etc., etc. Then you can think of the animal dungs, waste of the fishery industry, poultry wastes. All these wastes are biomass. So if we can collect such agricultural and urban waste and burn it, definitely we can produce energy. So collection and burning of agricultural and urban waste biomass is also considered as an energy source of the future. मतलब नगर शहरों से और आपका खेती का काम से जो बायोमास वेस्ट उत्पन्न होता है, जैसे शुगर केन रेसिड्यू, हम लोग शुगर केन गन्ना को काट देते हैं लेकिन उसका खेत में जो रह जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं शुगर केन रेसिड्यूज। या फिर एनिमल का डंग, या फिर एग्रीकल्चरल सेक्टर से जो वेस्ट उत्पन्न होते हैं, पोल्ट्री से जो वेस्ट उत्पन्न होते हैं, उन सभी वेस्ट को हम लोग एक जगह करके उसको जला के हम लोग उससे ऊर्जा संग्रह कर सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है जिसके माध्यम से हम लोग बायोमास में अंतर्निहित जो ऊर्जा है उस ऊर्जा को बाहर निकाल के हमारे काम में लगा सकते हैं। बट always remember, whenever we burn these wastes, it causes air pollution, and at the same time it also produces a lot of ash which becomes a cause of concern. So direct burning of biomass, which may be in the form of energy plantations or which may be in the form of agricultural and urban waste biomass, it is absolutely discouraged. Why is it discouraged? Because direct biomass burning causes air pollution and it also leaves a lot of waste residues in the form of ash. तो मतलब सीधा सीधी बायोमास को जलाना एक अच्छा तरीका नहीं है। क्यों? जब भी हम बायोमास को सीधे तरीके से जलाएंगे, वो एनर्जी प्लांटेशन से हो या फिर शहर और खेती के काम से जो अर्बन वेस्ट बायोमास आते हैं वो हो, अगर हम लोग डायरेक्ट उसका दहन कराएंगे या फिर जलाएंगे तो उससे वायु का प्रदूषण अवश्य होगा और उसको हम लोग जलाने के बाद जो रेसिड्यूज रह जाते हैं तो उस रेसिड्यूज भी एनवायरनमेंट या फिर पर्यावरण के लिए हानिकारक है। सो अ बेटर वे इज डेफिनेटली टू कन्वर्ट बायोमास इनटू बायोगैस। आई एम राइटिंग डाउन द टर्म, प्लीज नोट, टू कन्वर्ट बायोमास into biogas. Okay, so now let us understand what exactly is biogas. So remember, biogas is actually a mixture of methane, carbon dioxide and hydrogen. Apart from that, it also contains hydrogen sulfide. So what are the major gases present in biomass? Biogas. Remember, biogas is a mixture of methane, carbon dioxide, hydrogen and hydrogen sulfide. But the major constituent of biogas is methane. The major constituent of biogas is methane. And how is it formed? Methane is produced by degrading biomass in the absence of oxygen, and this degradation in the absence of oxygen, it is called anaerobic degradation. So I am writing down the name, please note down. It is called anaerobic degradation. It is called anaerobic degradation. DEGRADATION, anaerobic degradation. So how is biogas produced? Biogas is produced by the anaerobic degradation of biomass, and anaerobic means the degradation takes place in the absence of oxygen. The degradation takes place in the absence of oxygen. तो बायोगैस एक गैसीय मिक्सचर है और इसमें तरह तरह की गैसेस हैं, जैसे मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड एट्सेट्रा। लेकिन इसमें सबसे अधिक परिमाण में मीथेन गैस रहता है। तो बायोगैस का जो मिक्सचर है इसमें सबसे अधिक परिमाण में मीथेन गैस ही रहता है। और मीथेन कैसे तैयार होता है? मीथेन इज प्रोड्यूस्ड बाय द एनाएरोबिक डिग्रेडेशन
मीथेन इज प्रोड्यूस्ड बाय एनारोबिक डिग्रेडेशन, मतलब वो एक ऐसा पचन कार्य है जिसको ऑक्सीजन का एब्सेंस में किया जाता है, जिसको ऑक्सीजन का एब्सेंस में किया जाता है। और ऐसे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ऐसे कुछ बैक्टीरिया हैं जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में बायोमास को बायोगैस में रूपांतरित करता है। And in India, there is a tremendous potential for biogas production. Why? Because India has the largest cattle population in the world. And because India has the largest cattle population in the world, we have access to tremendous amount of animal dung. And that animal dung can be degraded in the absence of oxygen to produce मीथेन। तो हमारे देश में बायोगैस का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि हमारे देश में जो कैटल का पॉपुलेशन है वो दुनिया में सबसे अधिक है, तो हमारे पास सबसे अधिक परिमाण कैटल डंग का सप्लाई है। तो उस कैटल डंग को अगर हम लोग ऑक्सीजन के एब्सेंस में डिग्रेड करेंगे, एनारोबिकली डिग्रेड करेंगे, एनारोबिकली उसका विभाजन करेंगे, तो उससे मीथेन का उत्पादन, मतलब बायोगैस का उत्पादन संभव है। एंड दिस बायोगैस has many advantages. This biogas has many advantages. So now let us see what are the advantages. So one of the first major advantages of biogas is that it is a cheap source of energy, and obviously it is eco-friendly and non-polluting. So the process of biogas production is not at all what you can say environmentally polluting, and at the same time it is cheap and it is eco-friendly. तो बायोगैस एक ऐसा ऊर्जा है जो हम लोग आसानी से तैयार कर सकते हैं और उससे पर्यावरण का प्रदूषण भी नहीं होता है, क्योंकि बायोगैस उत्पादन का जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में कोई प्रदूषण नहीं होता है। देन biogas, you can supply it easily via pipelines. So there can be a direct supply of biogas from the production centers to the users. So biogas को हम लोग पाइप के द्वारा बहुत आसानी से एक जगह से दूसरा जगह में पहुंचा सकते हैं। Then after that animal dung which is being subjected to anaerobic degradation, after it has been anaerobically degraded, the sludge which is left over is rich in it is a rich source of fertilizer. So after that dung, the dung of the cattle etc. is broken down anaerobically, the sludge that is left over, that is also a fertilizer source which can be utilized in the agricultural sector. So बायोगैस का प्रोडक्शन के लिए वी मेनली डिपेंडेंट ऑन कैटल डंग, एंड दैट कैटल डंग एक बार अगर उसका एनारोबिक डिग्रेडेशन हो जाता है तो डिग्रेडेशन हो जाने का बाद भी वो एक फर्टिलाइज़र का हिसाब से उसको हम लोग खेती का काम में लगा सकते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ बायोगैस। सो व्हाट आर द एडवांटेजेस? नंबर वन, it is a cheap and non-polluting source of energy. Number two, there is no storage problem. We can supply the gas directly via pipelines. गैस को हम लोग पाइपलाइन का सहारा लेके एक जगह से दूसरा जगह पहुंचा सकते हैं। And number three, even after degradation of that dung material, the leftover sludge, it may act as a fertilizer. तो डंग का लेफ्ट ओवर स्लज, डंग का डिग्रेडेशन हो जाने के बाद जो स्लंग लेफ्ट ओवर है उसको हम लोग फर्टिलाइज़र का काम में खेती में लगा सकते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ बायोगैस। सो राइट डाउन अ फ्यू क्वेश्चंस, देन वी शैल प्रोसीड। नंबर वन, व्हाट इज बायोमास? What is biomass? Number two, what are the various ways by which we can utilize biomass energy? What are the various ways by which we can utilize biomass energy? Number three,
what are the problems of what are the problems of direct burning of biomass? What are the problems of direct burning of biomass? Then, what is biogas? What is biogas? Same question. How is it produced? What is biogas? How is it produced? Then, next question. What are the advantages of biogas? What are the advantages of biogas? What are the advantages of biogas? ठीक है? Okay. After talking about biogas, next we shall begin our discussion with biofuels. Next we shall begin our discussion with biofuels. So please note down biofuels. Okay. So now we need to understand what exactly are biofuels. Now see, the biomass that we obtain from the plants, from the animals, etc., they can be fermented, that is degraded in the absence of oxygen, to get certain compounds like ethanol and methanol. And these compounds, which are obtained in the form of ethanol and methanol, these compounds can be used as a fuel. These compounds can be used as a fuel, and these fuels are what we call as biofuels. These fuels are what we call as biofuels. So what are biofuels? Biofuels are practically the fuels that we obtain from biomass. So biomass is fermented, broken down in the absence of oxygen, to get certain alcohols like ethanol and methanol, and these alcohols can then be used as a fuel. And because we are obtaining this fuel from biomass, we shall call it as biofuel. तो biofuel एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिससे हम लोग बायोमास को ऑक्सीजन का एब्सेंस में उसको फर्मेंट कराते हैं, और ऑक्सीजन का एब्सेंस में बायोमास को फर्मेंट कराना मतलब एक तरह का विभाजन प्रक्रिया है. इट इज़ अ फॉर्म ऑफ अ डिग्रेडेशन प्रोसेस. टू फर्मेंट मीन्स इट इज़ अ फॉर्म ऑफ डिग्रेडेशन प्रोसेस. इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ ए डिग्रेडेशन प्रोसेस, मतलब विभाजन प्रक्रिया है. तो बायोमास को अगर हम लोग ऑक्सीजन का एब्सेंस में फर्मेंट कराएंगे तो उससे इथानॉल और मिथानॉल जैसा कुछ फ्यूल्स का उत्पादन संभव है. और क्योंकि इन्हीं फ्यूल्स को हम लोग जला सकेंगे और उससे ऊर्जा हमको प्राप्त संभव है, तो इन फ्यूल्स को हम लोग क्या कहेंगे? बायोफ्यूल्स. तो इन फ्यूल्स को हम लोग बोलेंगे कि दीज आर नथिंग बट बायोफ्यूल्स. ओके, बट these biofuels have both advantages and disadvantages. The advantage is that we can produce biofuels like ethanol from carbohydrate rich substances like sugarcane, etc., and it is a clean burning and non polluting fuel. So the two advantages which I can think of is that, first and foremost, fuels like biofuels like ethanol can be obtained from carbohydrate rich crops. If you subject these carbohydrate rich crops to fermentation in the absence of oxygen, you can obtain ethanol. And then when you are burning ethanol is a clean burning and non polluting fuel. तो बायोफ्यूल्स का सुविधा यही है कि कुछ ऐसे क्रॉप्स जिसका अंदर बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं, जैसे शुगर केन, उस क्रॉप से हम लोग इथेनॉल का उत्पादन कर सकते हैं अगर उसको हम लोग ऑक्सीजन के एब्सेंस में उसका ब्रेक डाउन करेंगे. और एक सुविधा है कि ये क्लीन बर्निंग फ्यूल है, ये आसानी से जल जाता है और इससे पर्यावरण का प्रदूषण नहीं होता है. बट
biofuels also have a disadvantage, and the disadvantage is, compared to petrol, their calorific value is pretty low. Compared to petrol, their calorific value is pretty low. So what is the meaning of the term calorific value? Calorific value practically refers to the amount of energy that can be produced when we burn a unit mass of fuel. So calorific value practically refers to the amount of energy that we get on burning a unit mass of that fuel. So if the calorific value is low, then you need to burn a greater amount of biomass to obtain more and more energy. तो ये है बायोफ्यूल का एक डिसएडवांटेज कि उसका कैलोरीफिक वैल्यू कम है. कैलोरीफिक वैल्यू मतलब हम लोग जब 1 किलो कोई फ्यूल को जलाते हैं उससे कितना ऊर्जा हमको प्राप्त होती है, वही है उसका कैलोरीफिक वैल्यू. तो क्योंकि पेट्रोल का कंपैरिजन में बायोफ्यूल्स का कैलोरीफिक वैल्यू कम है, तो मतलब ज़्यादा ऊर्जा पैदा करने के लिए हमको बहुत ज़्यादा परिमाण में बायोफ्यूल्स को बर्न करना पड़ता है, क्योंकि उसका कैलोरीफिक वैल्यू कमती है. तो these are some of the advantages and disadvantages of biofuels. Now there are several applications of biofuels that are taking place throughout the world, and a very common application of biofuel is what we call as gasohol. Gasohol is what we call as gasohol. Now what are gasohol? Gasohol is a fuel which is a mixture of ethanol and gasoline. So gasohol is a fuel which is a mixture of ethanol and gasoline, and it is becoming very popular in countries like Brazil and Zimbabwe for running their public transports, तो gasohol एक ऐसा fuel है जो गैसोलीन और इथेनॉल का संमिश्रण है, और कुछ देशों में ये काफ़ी पॉपुलर होते जा रहा है, जैसे आपका ब्राज़ील में, जिम्बाब्वे में, जहां हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट में वो लोग गैसोहॉल का इस्तेमाल और बढ़ा रहे हैं. सो दीज आर सम ऑफ द व्हाट यू कैन से एप्लीकेशंस ऑफ व्हाट वी कॉल एज बायोफ्यूल्स. सो राइट डाउन अ फ्यू क्वेश्चंस. राइट डाउन. नंबर 1, व्हाट आर बायोफ्यूल्स? What are biofuels? Same question. Give an example of a biofuel. Give an example of a biofuel. Give an example of a biofuel. Then write down what are the advantages and disadvantages of biofuels. What are the advantages and disadvantages of biofuels? Then what is gasohol? What is gasohol? Okay, acha. So with that we come to the end of discussion of renewable energy. Now we shall begin our discussion with non-renewable energy. Non-renewable means those energy resources which have a limited stock, which are also called stock resources, which do not get renewed continuously in nature, and with continuous use such energy sources are expected to get exhausted in the near future. So जिसको हम लोग नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स बोलते हैं, मतलब उसका परिमाण असीमित नहीं है, उसका परिमाण सीमित है. दैट इज़ वाई उसको हम लोग स्टॉक रिसोर्सेज बोलते हैं, और कंटिन्यूस यूज़ के दौरान वो बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है. सो वी विल बी बिगिनिंग आवर डिस्कशन विथ सच नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. अच्छा, इफ़ एनीवन हैज़ एनी डाउट्स प्लीज़ आस्क मी. किसी को कोई डाउट्स है तो पूछो. If anyone has any doubts, please ask me. Okay, so since no one is having
अच्छा, व्हाट इज गैसोहॉल? गैसोहॉल हम क्या बोले, ये एक संमिश्रण है किसका? गैसोलीन और इथेनॉल का। गैसोलीन और इथेनॉल, गैसोलीन और इथेनॉल का जो संमिश्रण है उसको हम लोग बोलते हैं गैसोहॉल। और ये एक पॉपुलर फ्यूल है, इट इज़ अ पॉपुलर फ्यूल जिसको हम लोग गाड़ियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे दुनिया का कुछ देशों में, जैसे ब्राज़ील, जिम्बाब्वे में गाड़ियों में गैसोहॉल का इस्तेमाल चालू हो गया है। ठीक है। अच्छा, एनीथिंग एल्स? इफ यू हैव एनी अदर डाउट्स प्लीज आस्क। बायोमास का डिसएडवांटेज, बायोमास का डिसएडवांटेज यही होगा कि डायरेक्ट बायोमास बर्निंग से आपका एनवायरमेंटल पोल्यूशन होगा, एयर पोल्यूशन होगा, वायु का प्रदूषण होगा, एक नंबर। और दूसरा डिसएडवांटेज यही होगा कि बायोमास का जो कन्वर्शन डायरेक्ट बर्निंग से कोई सुविधा तो सुविधा से असुविधा ज़्यादा है। मतलब आपको बायोमास को या फिर बायोगैस में या फिर बायोफ्यूल में रूपांतरित करना होगा, तो उससे फ्यूल का कॉस्टिंग बढ़ेगा। और तीसरा जो हम लोग अभी देखें कि बायोमास से आप कोई भी फ्यूल बनाएं उसका लेकिन आपका कैलोरीफिक वैल्यू पेट्रोल का कंपैरिजन में कम है। तो मतलब आपको ज़्यादा अधिक परिमाण में बायोमास को यूटिलाइज करना होगा, अधिक परिमाण में आपका फ्यूल का ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि कम फ्यूल से आपका जो ऊर्जा मिलेगी वो बहुत ही कम होगा। और बायोफ्यूल्स का एडवांटेज, ये क्लीन बर्निंग फ्यूल, क्लीन बर्निंग एंड नॉन पोल्यूटिंग। ठीक है। एनीथिंग एल्स? Anything else? Okay. Now we shall begin with our non-renewable energy sources, and in this non-renewable energy sources we will be studying coal, petroleum, natural gas and nuclear energy. So please note down what are the non-renewable energy resources that we will study. Note down, number 1 we shall be studying coal, मतलब कोयला. Number 2 petroleum. Number 3 natural gas, natural gas मतलब प्राकृतिक गैस. Number 4 nuclear energy. Number 4 nuclear energy. Okay, so first let us begin our discussion with coal. Now coal was formed on this planet say around 250 to 350 million years ago during the Carboniferous age. So I am writing down the name of the geological age when coal was formed. So coal was formed during the Carboniferous age. So it was formed around 250 to 350 million years ago during the Carboniferous age. And where? It was mainly formed in the hot and damp swamps where dead bodies of plants and animals were buried, and under heat and pressure they got converted into coal. So this process of coal formation took millions of years, and this process is called coalification. So coalification is the process of coal formation. Where did coal form? Coal was formed in the hot and damp swamps of this world around 250 to 350 million years ago during the Carboniferous age. It was formed by, or rather it was formed from the dead bodies of those ancient plants and animals who got buried in these swampy regions, and under heat and pressure they gradually got converted into coal, and this process of coal formation is known as coalification. It was known as coalification. तो कोल का जो फॉर्मेशन आज से लगभग 250 से 350 मिलियन ईयर्स पहले हो चुका है. 250 से 350 मिलियन ईयर्स पहले हो चुका है. कहाँ हुआ है? स्वैम्पी रीजियंस में, जहाँ काफ़ी गर्म है और वहाँ काफ़ी मॉइस्चर है, डैम्प है. तो इन्हीं सब इलाकों में कार्बोनिफेरस एज, उस एज का नाम को याद रखना है, कार्बोनिफेरस एज में कोल तैयार हुआ था. कैसे?
जो उस समय जो प्लांट्स और एनिमल्स जिनका मृत्यु हुई थी, तो उसका डेड बॉडीज अंडर हीट एंड प्रेशर वो आहिस्ता आहिस्ता कोयला में रूपांतरित हुआ। और ये जो कोयला में रूपांतरित होने का प्रक्रिया, ये एक बहुत ही लंबा प्रक्रिया है। इसमें कई साल लग सकते हैं, कई मतलब लाखों साल लग सकते हैं। और बिकॉज it took millions of years in the formation of coal, that is why we say that coal is a stock resource. It is not a flow resource, it is a stock resource. And with continuous use, coal is likely to get exhausted. So based on the carbon content, we find there are four basic categories of coal, and these are pit, lignite, bituminous, and anthracite. Based on the carbon content, there are four basic categories of coal: pit, lignite, bituminous, and anthracite. तो कोयला में कार्बन के भाग का अनुसार कोयला को हम लोग चार श्रेणियों में बांट सकते हैं। एक है पिट, दूसरा है लिग्नाइट, तीसरा है बिटुमिनस और चौथा है एंथ्रासाइट। पिट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट। ओके, now out of these four basic varieties of coal, pit is that variety which has the lowest carbon content, and anthracite is that variety which has the greatest carbon content. तो इन चार तरह की कोयला में से पिट कोयले में सबसे कम परिमाण कार्बन पाया जाता है और एंथ्रासाइट कोयला में सबसे अधिक परिमाण कार्बन मिलता है। तो मतलब पिट सबसे खराब क्वालिटी का कोल है और एंथ्रासाइट सबसे बढ़िया क्वालिटी का कोल है। सो पिट इज द लोएस्ट ग्रेड कोल एंड एंथ्रासाइट इज द हाईएस्ट ग्रेड कोल। एंड इफ यू थिंक ऑफ इंडिया, India has about 5% of the world's coal. India has around 5% of the global coal, and our major coal fields are located in Raniganj, Jharia, Bokaro, and the coal states of India are say Jharkhand, Odisha, West Bengal, etc. So दुनिया में जितना कोयला मिलता है उसका लगभग 5% हिंदुस्तान में मिलता है। और कहाँ कहाँ हम लोग का सबसे बड़ा कोल फील्ड्स तो यही है जहाँ हम लोग रहते हैं, रानीगंज, झड़िया, बोकारो। और इसका अलावा कोयला आपको मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश के कुछ जगहों में, झारखंड, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में, ये सब जगह में कोयला मिलेगी। But there is a massive problem of utilizing coal. The first problem is the process of coal mining. As we have discussed earlier, coal mining is not at all an eco-friendly process. It causes a lot of environmental damage, as we have discussed in an earlier class. तो कोयला उत्तोलन का जो प्रक्रिया है, जिसको हम लोग खनन कार्य या फिर खोदने का काम कहते हैं, वो पर्यावरण के लिए संपूर्ण रूप से हानिकारक है। और उससे क्या क्या हानि होती है ये हम लोग एक पिछले क्लास में आलोचना किए हैं। तो पहला कोयला को लेके समस्या यही है कि कोल माइनिंग पर्यावरण के लिए हानिकारक है। कोल माइनिंग इज एब्सोल्युटली हार्मफुल फॉर द एनवायरनमेंट। देन when we burn coal, we produce a lot of carbon dioxide, and this carbon dioxide gas is one of the major gases responsible for global warming. So burning of coal produces massive amounts of carbon dioxide, and this carbon dioxide gas is one of the major gases responsible for global warming. तो जब भी हम लोग कोयला को जलाते हैं, उसको जलाने से विपुल परिमाण में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन होता है, और यही कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। देन coal also contains small amounts of sulfur and other nitrogenous compounds. So when we burn coal, we release oxides of sulfur and oxides of nitrogen, and these oxides of sulfur and nitrogen not only cause air pollution, but they are also responsible for acid rain. So apart from producing carbon dioxide, when we burn coal, we produce tremendous amounts of oxides of sulfur and oxides of nitrogen.
So these oxides of sulfur and nitrogen not only cause air pollution and various diseases, but at the same time it is also responsible for causing acid rain. तो कोयला को जलाने से सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन नहीं होता है, उससे सल्फर का कुछ ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन का कुछ ऑक्साइड्स भी तैयार होता है। और ये ऑक्साइड सिर्फ वायु का प्रदूषण करते हैं ऐसा नहीं है, इससे एसिड रेन भी होती है जिसको हम लोग अम्ल वृष्टि कहते हैं, जिससे एसिड रेन्स भी होती हैं। सो दीज आर सम ऑफ द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विथ कोल। सो राइट डाउन अ क्वेश्चन, discuss coal as a resource. Number 2, name some areas in India where coal is found. Name some areas in India where coal is found. Number 3, what are the problems of using coal as a fuel? What are the problems of using coal as a fuel? What are the problems of using coal as a fuel? Okay. Next, we shall begin our discussion with petroleum. So after discussing about coal, we shall begin our discussion with petroleum. Okay, Petroleum. So please note down petroleum. Okay. Now remember, as coal was formed on land, petroleum was formed from marine organisms under the ocean. So coal was formed on land from the land plants and animals. Petroleum was formed under the sea from the dead and decaying remains of the marine organisms. And if you think of the modern global economy, petroleum, we can say, is the lifeline of the modern global economy. And it is obviously a cleaner fuel compared to coal. It is a cleaner fuel compared to coal. तो जैसे कोयला का कोयला ज़मीन में तैयार हुआ था ज़मीनी पशु और वनस्पतियों से, उसी तरह पेट्रोलियम समुंदर का नीचे तैयार हुआ था समुद्री जीवों से। वो समुद्री जीवों से तैयार हुआ था। तो जैसे कोल तैयार हुआ था वैसे ही पेट्रोलियम तैयार हुआ था, लेकिन अंतर यही है कि कोल ज़मीन में और पेट्रोलियम समुंदर का नीचे तैयार हुआ था। और आज का दुनिया का जो पूरा अर्थव्यवस्था है वो उसका लाइफलाइन है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को छोड़ के हमारे अर्थव्यवस्था चालू नहीं रह पाएगा। एंड देयर आर अराउंड 13 countries in the world which have around 67% of the global petroleum reserves, and these 13 countries form what we call as the OPEC. OPEC मतलब Organization of Petroleum Exporting Countries. So what is the meaning of OPEC? OPEC means Organization of Petroleum Exporting Countries. So दुनिया में ऐसा 13 देश हैं, 13 जिसके पास दुनिया का 67% 67% पेट्रोलियम है। और ये साथ में OPEC एक संगठन बना के चलते हैं। और OPEC का पूरा फॉर्म क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। Now if you think of a country like Saudi Arabia, all of you must have heard the name of this country, Saudi Arabia. They have around 1/4 of the global oil reserves. So Saudi Arabia is a country which is petroleum rich. They have 1/4 of the global oil reserve. सऊदी अरब एक ऐसा देश है जिसमें दुनिया का लगभग 1/4 पेट्रोलियम का डिपॉजिट है। So this petroleum, if we think of our country,
It is located, petroleum is obtained from Digboy, which is located in Assam. It is obtained from Bombay High, which is an oil drilling place. Then it is also available in the coasts of Godavari, Krishna, Kaveri and Mahanadi river. So the major oil fields in India are located in Digboy in Assam. It is also located in Bombay High. Then it is also obtained from the deltaic coasts of Godavari, कृष्णा, कावेरी एंड महानदी. तो हिंदुस्तान का जो पेट्रोलियम का डिपॉजिट्स हैं वो कहाँ कहाँ है? वो मेनली आसाम का डिगबॉय में है, और फिर आपका बॉम्बे हाई, आप लोग नाम सुने होंगे, जहाँ से पेट्रोल को बाहर निकाला जाता है, या फिर गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी, इन सब नदियों का जो डेल्टिक रीजियंस हैं उस डेल्टा रीजियंस में भी पेट्रोलियम रिजर्व्स अवेलेबल हैं. अच्छा, ओपीईसी का फुल फॉर्म हम एक बार फिर से बोल रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज. ओपीईसी का फुल फॉर्म Organization of Petroleum Exporting Countries. Okay. Now, when we extract petroleum, we get it in the form of crude oil, and then that petroleum is subjected to a very technical process which we call as fractional distillation. And when we subject petroleum to fractional distillation, from that impure mixture of crude oil, we get several useful products which find tremendous use in the industry, like petroleum gas, like kerosene, petrol which we use in our vehicles, diesel, fuel oil, paraffin wax, etc. So remember, the petroleum which we take out from the ocean or from the riverbeds, etc., it is actually a very impure mixture of crude oil. That impure mixture of crude oil has to be purified, and it is subjected to a process called fractional distillation. And this process of fractional distillation gives us several useful products, the useful products which we obtain from crude oil. What are these products? Say for example, kerosene, petrol, diesel, paraffin wax, etc. And each of these products has different uses in the industry. तो हम लोगों को जिस फॉर्म में, जिस आकार में पेट्रोलियम मिलता है, खनिज तेल, वो तेल एकदम इम्प्योर है और उसमें बहुत सारी इम्प्यूरिटीज़ का संमिश्रण है. तो उसको पहले प्यूरिफाई किया जाता है, परिशोधन किया जाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बोल के एक प्रोसेस से. तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक ऐसा पेट्रोलियम का परिशोधन प्रक्रिया है जिसके चलते हम लोग पेट्रोलियम को परिशोधन करते हैं, और इस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रक्रिया के माध्यम से हम लोग तरह तरह की प्रोडक्ट्स उस क्रूड ऑयल का मिक्सचर से बाहर ले आते हैं, जैसे पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, फ्यूल ऑयल, पैराफिन वैक्स, etc. etc. Now, looking into some of the advantages of petroleum. Now remember, compared to coal, petroleum is a cleaner fuel. It burns clean and it does not leave any residue. So अगर हम लोग पेट्रोलियम का कुछ सुविधा को, तेल का कुछ सुविधा देखेंगे तो कोयला का कंपैरिजन में ये क्लीन बर्निंग फ्यूल है, और जब भी वो जलता है कोयला से जैसे ऐश रह जाता है, इट लीव्स ऐश एज अ रेसिड्यू, लेकिन पेट्रोलियम को जलाने से कोई रेसिड्यूज नहीं रहता है, ये संपूर्ण तरीके से जल जाता है. एंड देन petroleum is easy to store and transport. Petroleum's transportation is quite easy compared to coal. So petroleum का जो transport है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में भी petroleum का सुविधा है. And remember, because of these two reasons, that is, it is a clean burning fuel, it does not leave any residue on burning, and it is easy to store and transport. That is why petroleum is more preferred as a fossil fuel. तो fossil fuel का रूप में पेट्रोलियम का एक्सेप्टेंस ज़्यादा है. क्यों? क्योंकि वो क्लीन बर्निंग है, उससे कोई रेसिड्यूज पैदा नहीं होते हैं, और उसको ट्रांसपोर्ट करना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना कोयला से आसान है. तो इसी के कारण पेट्रोलियम एक प्रेफर्ड फ्यूल है, कोयला का कंपैरिजन में पेट्रोलियम ज़्यादा पॉपुलर है. अच्छा, विद दिस we shall stop in today's class. Just before I end,
हम एग्ज़ाम को लेके दो चार बात बोल देते हैं, आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। योर एग्जाम्स इंटरनल ENVS इंटरनल एग्जामिनेशंस विल कंसिस्ट ऑफ 10 MCQ क्वेश्चंस। आपका एग्जाम में 10 MCQ क्वेश्चंस दिया जाएगा गूगल फॉर्म के माध्यम में, एंड दैट एग्जामिनेशन विल बी बेस्ड ऑन 2 चैप्टर्स। पहला 2 चैप्टर का ऊपर निर्भर करके आपका एग्जामिनेशन होगा। पहला है बेसिक्स ऑफ एनवायरनमेंट, पहला चैप्टर। दूसरा है प्राकृतिक संसाधन, दैट इज नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये 2 चैप्टर्स अब एग्जाम के लिए तैयार कीजिएगा। और आपका एग्जामिनेशन का क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली इंग्लिश में ही होगा, हाँ, एंड इट विल बी कंडक्टेड वाया गूगल फॉर्म। तो हम उस फॉर्म का लिंक आपको दे देंगे एग्ज़ाम का पहले, और एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम दिया हुआ रहेगा। यू हैव टू आंसर द क्वेश्चंस विद इन दैट टाइम फ्रेम। उस निर्दिष्ट टाइम का अंदर आपको क्वेश्चंस का आंसर लिखना है, मतलब गूगल फॉर्म में आपको MCQs आंसर करना है, और यही एग्जामिनेशन का पैटर्न रहेगा। डेट्स अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ है। मोस्ट प्रोबेबली फरवरी का 3rd वीक, मोस्ट प्रोबेबली इट विल बी कंडक्टेड इन द 3rd वीक ऑफ व्हाट यू कैन से फरवरी। अच्छा, टाइम अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है कितना रहेगा। 10 क्वेश्चन लिए ज़्यादातर 15 मिनट रहेगा, और क्या 15-20 मिनट, 15 to 20 मिनट्स। डेट्स फाइनलाइज नहीं हुआ है, ठीक है। तो आप लोग सिर्फ आपका क्लास का लेक्चर्स मत सुनिए यूट्यूब में, दूसरा क्लासेस का लेक्चर्स भी सुनिए, क्योंकि दूसरा क्लासेस में हम लोग कुछ आगे चल गए हैं, तो वो सब लेक्चर्स भी आप लोग बार बार सुनिए। और क्वेश्चंस लेक्चर्स में से ही आएगा, और एग्ज़ाम का पहले हम कुछ सजेशंस आपको भेज देंगे, कुछ डेट्स, इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह हम आपको भेज देंगे, वही सब ध्यान से पढ़ के आइएगा, हाँ। और बढ़िया से मेरा लेक्चर्स को बार बार सुनते रहिए, उसी में से सारा क्वेश्चंस आएगा, उसका बाहर कुछ नहीं। और एग्ज़ाम का ठीक पहले हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स, इंपॉर्टेंट लॉज, ये सब हम आपको व्हाट्सएप का ग्रुप में भेज देंगे, ठीक है। ओके, शॉर्ट क्वेश्चंस कुछ नहीं आएगा, सिर्फ MCQ आएगा, सो डोंट बॉदर अबाउट शॉर्ट क्वेश्चंस। Just listen to the lectures very carefully, read through the chapters carefully, and I will definitely give you some suggestions prior to the examination. First 2 chapters, basics of environment and natural resources, ठीक है। Okay, so with that we come to the end of today's class. We'll meet again next Friday. Okay.